and Aligarh Muslim University is fully committed to this project. देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये चेन ऑफ इवेंट्स है, ये वन ऑफ कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। इससे पहले जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद कुछ एनजीओ ने कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2 कॉन्फ्रेंसेस करी। इसमें एक कॉन्फ्रेंस में जो फर्स्ट लेडी है ईरान की वो आई, जो आज फर्स्ट लेडी, उस टाइम नहीं थी फर्स्ट लेडी, उनकी डॉटर भी आई, उन्होंने भी पेपर प्रेजेंट किया। उसके अलावा जो है वो 28 दिसंबर को एक हम लोगों ने सेंटेनरी कॉन्फ्रेंस की थी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इसमें जो द देन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री मुख्तार अब्बास नकवी वॉज द चीफ गेस्ट एंड श्री कृष्ण गोपाल जी डिलीवर्ड द की नोट एड्रेस, और एनुल हसन साहब भी इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर थे, और कई और उसके अंदर स्कॉलर्स आए थे, ईरान से भी आए थे और जगह से भी आए थे। जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर थे उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था उसको। तो ये चेन ऑफ इवेंट से ये वन ऑफ चीज नहीं हो रही। अब दारा शिकोह के बारे में हम क्यों कह रहे हैं? देखिए दारा शिकोह के बारे में 3 चीजें आप समझिए, तब आप इसको समझ पाएंगे चीज। अगर ये 3 चीजें हम लोग नहीं समझेंगे तो समझा जाएगा क्यों हो रहा है, और भी मुगल एम्परर्स हैं और भी प्रिंसेस हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा। तो ये बात मैं जो कह रहा हूँ वो जो सुप्रिया गांधी ने जो बात कही, सुप्रिया गांधी इज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट येल यूनिवर्सिटी, उसने तो दिखाया भी था उन्होंने पिक्चर में उसका। तो सुप्रिया गांधी इज अ वेरी फेमस प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट येल यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो पहली बात जो उन्होंने उसने कही, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दारा शिकोह, why the renewed interest is there। उसका बेसिक जो इशू है वो ये है कि दारा शिकोह जो था स्कॉलर था पर्शियन और संस्कृत दोनों का। तो उसने जो है जो उपन्यास जो थे वो ट्रांसलेट किए संस्कृत से पर्शियन में। इसका जो है इम्पैक्ट हुआ इंडिया में और बाहर भी। इंडिया में कैसे इम्पैक्ट हुआ? इंडिया में इस तरह से इम्पैक्ट हुआ कि उस टाइम पे जो हिंदू एलीट थी, खासतौर से जो ब्राह्मण्स थे, कायस थे, जो ट्रेडिंग क्लास थी, वो लोग जो थे पर्शियन जानते थे, संस्कृत सब लोग नहीं जानते थे। ये पर्शियन का स्टेटस वो था जो आज इंग्लिश का स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया कि इंग्लिश जो है वो हर आदमी जानता है, साउथ का आदमी भी जानता है, नॉर्थ का आदमी भी जानता है, लिंक तो इसलिए पर्शियन कोड लैंग्वेज थी, तो ये लोग सब जानते थे उसको। संस्कृत से इतना वेलवर्स नहीं थे जितना पर्शियन से थे। तो जब उपन्यास का ट्रांसलेशन हुआ तो ये लोग एक्सपोज हुए उससे, और उन्होंने इसे समझा और इसको डिसेमिनेट किया फिर और जगह। एक तो इंडिया में इम्पैक्ट हुआ उसका कि दारा शिकोह ने खुद रियलाइज नहीं किया, सुप्रिया गांधी कहती हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका इन हिज लाइफ टाइम ही नेवर रियलाइज दिस इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट। जो फॉरेन कंट्रीज में इम्पैक्ट हुआ वो यूरोप में कैसे, फर्स्ट टाइम यूरोप वाज एक्सपोज टू हिंदू रिलीजियस थॉट्स। वो कैसे हुआ? द यूरोपियंस स्पेशली द फ्रेंच एंड द स्कॉलर्स दे न्यू पर्शियन, दे डिड नॉट नो अरेबिक। वंस द उपन्यास दे वर ट्रांसलेटेड into Persian, they translated these religious texts into Latin and French. So the European community was also exposed to this religious thought. And what are the many things in Hindu religion and culture? तो ये 2 इम्पैक्ट थे उसके। एक चीज ये थी। दूसरा जो चीज है वो ये है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड इंटरफेथ डायलॉग। तो उसने अपने कोर्ट में बनारस से और जगह से, मिर्जापुर से हिंदू स्कॉलर्स को बुलाया,
उनसे संस्कृत भी सीखी, खुद भी गए बनारस, वहाँ पे संस्कृत सीखी। उसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर्स तो थे ही कोर्ट में, मुगल कोर्ट में, उनको जमा किया। क्रिश्चियन भी आते रहते थे ट्रेडिंग के लिए और चीज़ों के लिए। तो उन्होंने अपने कोर्ट में एक इस्टेब्लिश किया इंटरफेथ डायलॉग। क्या क्या कॉमनैलिटीज हो सकती हैं जो इंडिक रिलीजन्स हैं और अब्राहमिक रिलीजन्स में। इंडिक रिलीजन्स हुए जो इंडिया में हुई, हम लोग उसका पता है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है। और अब्राहमिक रिलीजन्स हुए हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज्म है। तो इनमें क्या कॉमनैलिटी हो सकती है? व्हाट इज कॉमन इन दीज रिलीजन्स? तो दूसरी चीज ये हुई। तीसरी चीज ये थी कि वो एक फिलोसफर भी था। तो जब आदमी फिलोसफर होता है तो उसके थॉट्स होते हैं थॉट्स, और वो लिखता भी है उन चीजों को। तो वही जो है मैनिफेस्ट हुए, जो उसकी किताब है जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, मजमूअ बहरीन। दिस इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ टू सीज और द कॉन्फ्रेंस ऑफ टू ओशंस। देखिए, दारा शिकोह ही नेवर बिकेम एन एम्परर, बट ही लेफ्ट हिज फुटप्रिंट्स on Indian civilization, on many aspects, on the Indian thought, on Indian philosophy, tolerance, artist. He was also artist. He was also painter. He was a great architect. बहुत सी बिल्डिंग्स उसने वो की थी। उन परी महल गार्डन भी था श्रीनगर का। लाहौर में एक बिल्डिंग उसने मस्जिद भी करी वहाँ पे। उसने अपनी जो वाइफ का टोम पहले ही बना दिया था, वो नादर बेगम का, वो भी उसने डिज़ाइन किया वहाँ पे। और उसने कई चीज़ें करी। जो दारा शिकोह लाइब्रेरी है दरियागंज में, ये भी उसने खुद डिज़ाइन करी। तो उसकी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी थी। और जो भी उसके थॉट्स हैं आजकल, I think they are as relevant today as they were before. Aligarh Muslim University has established a Dara Shikoh Center for Interfaith Understanding and Dialogue. The center has published several books, journals and other material on Dara Shikoh, and is also engaged in translation of various works from Persian into Urdu, Hindi and English. The director of the center, Professor Ali Mohammad Naqvi, will brief you in one of the scientific sessions in detail about the work. The center had also organized AMU Centenary Dara Shikoh Conference on why Dara Shikoh matters today, remembering his works and personality on 28 December 21 in Constitution Club, New Delhi. This I have already mentioned. In another conference, I have also mentioned the First Lady of Iran and her daughter attending the conference. Now, apart from the conferences and the literary works which the Aligarh Muslim University is doing, in the Maulana Azad Library of the Aligarh Muslim University, which is one of the best known libraries regarding medieval history and Oriental work, I know your library is also great, of Manu. We have also created a website on Dara Shikoh, which will act as an online database and repository of all his literary works along with all research and publications related to him. So this has been done by the University Librarian, Professor Nishad Fatma, and one of the scholars of Dara Shikoh, Dr. Amar Hassan, who is present here. So they have done this work to establish this website and put all the material there. Through this project, the university aims to promote interfaith understanding, strive for national integration by bringing religious communities closer, and peace-building efforts among the followers of different faiths. By fostering a culture of liberal views and tolerance, developing the ideas of peaceful coexistence and pluralism among the young, particularly students, the university through its undertakings such as this wishes to promote peace and harmony. Majma' al-Bahrain is one of the earliest works of comparative religious study. It is surely a harbinger of pluralistic approach.
Majmu al-Bahrain is the explicit expression of this perception. Dara's magnum opus is a bold assertion of his cherished wish that the social fabric of the ages-old multicultural Indian society should not be fragmented due to its diversity. That the social fabric of this ages-old multicultural Indian society should not be fragmented due to its diversity. Because underlying the apparent differences, buried under rituals and superstitions, the points of illumination and harmony between these two great faiths of the world were more important than the points of delusion. I will once again repeat that underlying the apparent differences buried under rituals and superstitions, the points of illumination and harmony between these two great faiths of the world were more important than points of delusion. He saw behind the veil of Maya and Majas and discovered the fundamental unity of all religions without any dichotomy. Today, this is Dara Shikoh's greatest legacy, which was crucial during his time and shall remain relevant in all times to come. Dara Shikoh's earnest desire was to rise above prejudice and the inadequacy of the ordinary human consciousness, to perceive in one mental kaleidoscope the entire view of a universal reality. Kaleidoscope means wider view. You can see things, different things in one view. To perceive in one mental kaleidoscope the entire view of a universal reality. His mystical journey had begun early, and the more he traversed on this path, guided by both Hindu and Muslim saints and Sufis, the more convinced he became that the ultimate truth was not the excessive possession of any particular faith or any chosen religion. The ultimate truth was not the exclusive possession of any particular order or any chosen religion. His mind attained certainty through the mystical vision of the unitative state, where he could discern the truth in you, in me, and in all religions and their followers. In Dara's expanded awareness, anomalies had fused and became one. As I have already mentioned, Dara Shikoh was one of the first personalities who started movement for interfaith understanding and highlighted the commonalities among religions. This I have already mentioned. Dara Shikoh is widely renowned as an entitled paragon of the harmonious coexistence of heterodox traditions of the Indian subcontinent. He was an erudite champion of mystical religious speculation and a poetic diviner of syncretic cultural interaction among people of all faiths. He is known as a pioneer of the academic movement for interfaith understanding in India, who had a deep understanding and knowledge of major religions of the Indian subcontinent. He acquired proficiency in Sanskrit and Persian, which enabled him to play a key role in popularizing Indian culture. This I have already elaborated. Dara Shikoh is also credited with the commissioning of several exquisite, still extant examples of Mughal architecture. Among them the tomb of his wife Nadira Begum in Lahore, the shrine of Mian Mir also in Lahore, the Dara Shikoh Library in Delhi, the Akhund Mullah Shah Mosque, and the Pari Mahal Garden Palace in Srinagar, Kashmir. At the age of 25 years, Dara wrote his first book, a concise document detailing the lives of the Prophet, peace be upon him, and his family, the caliphs, and of the saints belonging to the 5 major Sufi orders then popular in India. He is a great patron of the arts and is widely considered to represent the pinnacle of Indo-Islamic cultural assimilation. I am confident that this conference will further the cause of interfaith understanding, promote harmony and tolerance, which will be immensely beneficial for academicians, students and researchers. In the end, I thank Professor Anwar Hassan Saab and all the other members of the organizing committee and all the officials of this great institution
for inviting me and giving me the opportunity to be part of the occasion. Thank you so much. बेहद शुक्रिया सर। ज़र्रात का